अच्छा जी, नेक्स्ट में वी हैव रोल नंबर MCS 200012 फुल टेस्ट ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕੀਤੀ ਹੈ ਸੈਂਡ ਕਰ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग क्वालिटी एंड TMT टॉप मैनेजमेंट टीम जेंडर डाइवर्सिटी। तो आपने ये दो वेरिएबल्स जो हैं इनका रिलेशनशिप देखना है इसमें। अच्छा, इसमें सबसे पहला जो पेपर है दैट इज चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स रूरल ओरिजिन एंड इंटरनल कंट्रोल क्वालिटी। Internal control quality. I have to see into detail. Topic is financial reporting quality and top management team gender diversity. How does CEOs ਅਸਲ में अंडे rural यार दो कीते origin? ने एक अपना एक ਤੁਹਾਡਾ अच्छा जी, नाउ अब ये जो आपका पेपर है इसमें इशू है, इसमें जेंडर डाइवर्सिटी नहीं है TMT की, इसमें CEOs रूरल ओरिजिन की बात हो रही है। सो ये उसकी पर्सनल करेक्टरिस्टिक तो है TMT की, लेकिन इसमें जेंडर डाइवर्सिटी नहीं है। आपका टॉपिक जो है वो है रेलिवेंट टू फाइनेंशियल रिपोर्टिंग क्वालिटी एंड टॉप मैनेजमेंट टीम जेंडर डाइवर्सिटी। तो उससे रेलिवेंट आपको पेपर करना है। दिस पेपर इज़ नॉट रेलिवेंट। चाइनाज अर्बन एंड रूरल ड्योर सिस्टम यूजिंग ए हैंड कलेक्टेड सैम्पल चाइनीज लिस्टेड फर्म बिटवीन 2016 and 18। our paper investigate the effect of CEO's rural background on the quality of firms internal control। सो ये रूरल बैकग्राउंड जो है वो जेंडर डाइवर्सिटी के अंदर नहीं आता। फर्दर वी फाइंड दैट व्हेन CEO इज़ फीमेल, ओके। अच्छा, इस कॉन्टेक्स्ट से हम इसको इंक्लूड कर सकते हैं। CEO इज़ फीमेल, द पॉजिटिव इफेक्ट ऑफ CEO रूरल ओरिजिन ऑन द इंटरनल कंट्रोल क्वालिटी ऑफ फर्म इज़ नॉट pronounced। However, when the CEO is older and has higher educational background, the positive impact of CEO rural origin to internal control quality of firm is more pronounced। Okay, you can include this paper। उसके बाद सेकंड पेपर टुवर्ड्स सस्टेनेबल कॉर्पोरेट बिहेवियर, द इफेक्ट ऑफ critical mass of female directors on environmental, social and governance disclosure। ठीक हो गया, क्रिटिकल mass of female on environment, social and governance disclosure। अगेन हम फाइनेंशियल रिपोर्टिंग क्वालिटी और टॉप मैनेजमेंट टीम की जेंडर डाइवर्सिटी की बात कर रहे हैं। ठीक है, ESC फाइनेंशियल रिपोर्टिंग क्वालिटी भी अंदर आना है। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स have recently become more to stakeholders consent, providing more transparent information and adopting more sustainable business strategies. This the influence of critical mass of women on board on environmental social disclosure score and its three components separately using a sample of a listed company. We show that reaching a critical mass of female board members, going from one or two women to at least three, enhances the level of ESG disclosure. The result also show that critical mass of female board members on every component of ESG score, with the highest contribution of women reaching to governance score. This finding provide highest to shareholders and policymakers suggest that the board member is particularly effective in improving transparency, and it can be okay. You can include this paper exploring the gender wage gap among project managers, a multinational of human capital and national policies. Human capital theory to project management profession and such gender wage gap across the globe. We use salary survey data from project management. We use salary survey data from project managers and multinational create data to investigate the relations among human capital variable national policy salaries and gender wage gaps. This will show the project manager profession consistently has a narrow gender wage gap, and the national gender wage gap using ANOVA and mediation model will show that project management gender wage gap can be reduced in the presence of national anti-discriminatory laws and national human capital development and raise women's salaries to reduce the gender gap wage gap among project managers in westernized countries. However, the human capital theory did not apply to gender wage gap among project managers in non-Western contexts. Other recommendations to reduce gender wage gap include a national and organizational policies such as discrimination among women in hiring practices, skill training, career development, education opportunities. We conclude there is still more work to be done to achieve equal pay between men and women, even in project management profession and especially in non-Western context. ये पेपर जो है इसमें इशू है।
ये पेपर इरेलीवेंट है। अगेन आपको बार बार अपना टाइटल जो है उसे देखना चाहिए, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग क्वालिटी एंड टीएमटी जेंडर डाइवर्सिटी। ठीक है, अब इस पेपर के अंदर जेंडर डाइवर्सिटी तो एग्जिस्ट कर रहा है, लेकिन दिस इज जेंडर रेलिवेंट स्टडी, बट इसमें फाइनेंशियल रिपोर्टिंग क्वालिटी जो है वो डिस्कस नहीं हुआ हुआ किसी भी हवाले से। सो इस वजह से यू कैन नॉट इंक्लूड दिस पेपर। सीएफओ जेंडर एंड फाइनेंशियल रिपोर्टिंग ट्रांसपेरेंसी इन बैंक्स, ओके। Unobservable character of board directors and performance of financial services firms in Nigeria. I have to see the abstract link between unobservable board directors on corporate board and firm performance to extend the literature in corporate governance and from the perspective of emerging African economies. A mix of performer may be used to Q and share price and unobservable work captured as statistic element and heterogeneity of unobservable board characteristic, gender diversity. Okay. And the study applied non-linear genetic classic factors in order to examine the data set of considered donor year observation from donor connection from listed on positive skewness and leptocurtic distribution were found for all the variables. Correlation matters will no matter of the highest value. अच्छा, इस पेपर में भी मुझे प्रॉब्लम्स जो है वो नज़र आ रहे हैं इस डॉक्यूमेंट के अंदर भी, क्योंकि अगेन इधर डाइवर्सिटी की बात हो रही है, जेंडर डाइवर्सिटी की बात हो रही है, लेकिन प्रॉब्लम्स जो हैं वो किधर नज़र आ रहे हैं, मुझे फाइनेंशियल रिपोर्टिंग क्वालिटी में प्रॉब्लम्स नज़र आ रहे हैं। तो वी मस्ट इंक्लूड दोज पेपर which have discussed the relationship between both variable financial reporting quality and gender diversity। टॉप मैनेजमेंट टीम की जेंडर डाइवर्सिटी की बात की है, तो देन वो पेपर जो है वो हमारे इंक्लूजन क्राइटेरिया में आएगा, जो कि इस पेपर में नहीं है। इस पेपर में सिर्फ जेंडर डाइवर्सिटी और दूसरी तरफ जो है वो परफॉर्मेंस ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज फर्म्स की बात हो रही है, मतलब ये फर्म्स की जो फाइनेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड कर रही हैं पब्लिक को, उनकी फाइनेंशियल परफॉर्मेंस की बात कर रहे हैं। सो ये पेपर इंक्लूड नहीं करेंगे। डू एक्सटर्नल लेबर मार्केट इंसेंटिवाइज constrain bad news holding the CEO industry tournament and crash risk reduction। अच्छा जी, industry tournament incentives induces you to undertake strategy that reduce the propensity of a firm to incur future stock price scarcity, has a mitigating effect on accounting techniques such as accrual manipulation. Okay, use the channel for city more effectively reducing crash risk when there is low information and weaker external results are robust from governmental control, gender monitoring. Okay, so this can be included the impact of CEO age and education level on earnings management। एज और से हमारा तो जेंडर से रेलिवेंट था। CEO age and education level on the earning are now listed। Vietnamese real estate companies from the period research where CEO age has negative correlation, I think older are more conservative and ethical than young CEO from many CEO who pursue higher education at less likely to encounter earning money in addition performance CEO gender some size and CEO duality are correlated to earning management। Okay, you can include this paper, the impact of CEO gender on corporate fraud। Okay, this is good। Gender equality's impact on female directors efficacy, ठीक है। Managers open innovation and business performance in SMEs, a moderated model of job crafting and gender। सो जेंडर का पर्सपेक्टिव तो इसमें नजर आ रहा है, लेकिन ट्रांसपेरेंसी फाइनेंशियल रिपोर्टिंग क्वालिटी जो है उसका शायद नहीं है। डिफाइनिंग व्हेन मेल मैनेजर्स इन्वॉल्व इन explorative and exploitative activities, they tend to craft their jobs more as compared to females. In turn, when jobs are redesigned, it brings a positive impact on business performance as perceived by managers। The study provides implication for policymakers with regard to device measures to enhance job crafting capacity of managers। Okay, this can be okay. The previous paper can be included। Next one, female tainted directors, financial reporting quality analysis. Okay, co-opted director, gender diversity and crash risk evidence from China। Co-opted directors, gender diversity, ठीक है, and crash risk evidence from China। Okay, you can include this paper also, क्योंकि मार्केट क्रैश जो है वो ऑब्वियसली उसका ट्रांसपेरेंसी के साथ जो है वो रिलेशनशिप होगा। द एफिलिएशन एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फीमेल डायरेक्टर्स एंड अर्निंग्स मैनेजमेंट। ओके, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स एंड फाइनेंशियल रिपोर्टिंग क्वालिटी। इसमें हमें जेंडर डाइवर्सिटी को देखना होगा।
Financial reporting quality in Vietnam listed companies. The research uses FEM, REM, and GLS regulation model that was conducted at Energy Enterprises listed stock market in Vietnam from 2010 to 18. The researcher found that board of directors size, independence, chairperson come CEO has positive impact on financial report, while board of director meeting frequency has a negative impact. The audit quality ratio liability has positive impact on financial reporting, while the company size has negative impact. Percentage of female board of directors. Okay, so you can include this paper. Frontline nurse managers vision for their units a qualitative study. ये थोड़ा सा डाउटफुल लग रहा है मुझे to elucidate front-line nurse visions of their units background. Managers have the opportunity to imagine and share their vision for effective unit management. Semi-executive work connectively for a manager working at inpatient units into hospital with significant data were qualitatively analyzed using an inductive approach focusing on participants' intents. Although participants showed four types of in vision, five categorized and 18 subcategories were extracted through the analysis of their descriptions about the actual cases reflecting their vision the categories. अच्छा ये तो टोटली इरेलीवेंट पेपर है इसका कोई ताल्लुक ना फाइनेंशियल रिपोर्टिंग क्वालिटी के साथ है ना इसका कोई ताल्लुक जेंडर डाइवर्सिटी के साथ है टॉप मैनेजमेंट टीम की ये आपने एक ब्लेंडर इधर किया है डू टॉप मैनेजर इंडिविजुअल क्रिएशन इफेक्टिव अकाउंटिंग मैनिपुलेशन ठीक है दिस पेपर इज रेलिवेंट आई थिंक जेंडर डाइवर्सिटी पोर्शन इज प्रेजेंट ओवर हियर उसके बाद आ गया ऑडिट कमेटी फीमेल डायरेक्टर्स एंड टाइप ऑफ फीमेल एंड मेल फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स further evidence okay you can include this paper female representation on boards and CEO performance induced turnover evidence from Russia अच्छा इधर फिर अगेन जो है वो हमें देखना है कि क्वालिटी की बात हो रही है कि नहीं research on what qualities of a board affects its decision making and effective of research and literature female board we study Russia where gender difference are prominent and female occurs by happenstance rather than regulate intentionally. Overall, we are able to attribute finding female on board. Our study contribute to the organic research to corporate governance in Russia. Although Russian economy has demonstrated unprecedented growth among emerging market research and corporate governance in Russia remains scarce. Our study is among first effort to understand the amount our investment therefore offers important and several policymakers and practitioners. This study is on CEO turnover and firm value. We focus on Russia, particularly country with vast standard differences. This has supported Russian findings using a sample of public combination of Moscow exchange. We find that female division on board is associated with a lower CEO turnover performance sensitivity. Further, female board appear to add firm value. As we find the CEO its retention decisions are associated with improved future firm value when the decision is made by furthermore, we identified that female representation on board is associated with greater diligence after retaining their underperforming CEOs. Our findings suggest that female board tend to develop a long-term view of CEO performance and that such board a greater diligence and sportiveness, thereby adding shareholder value. Our results also indicate a patience and collaboration of corporate boards afford opportunities to develop strategies thinking firm in the time of crisis. Our research also representation no. This paper cannot be included क्योंकि इसमें जेंडर की बात हो रही है COT टॉप मैनेजमेंट जेंडर की बात हो रही है बट इसमें फाइनेंशियल रिपोर्टिंग क्वालिटी का पोर्शन जो है वो नहीं है study on the relation between gender correction of CFO and earnings management okay you can include CEO characteristics and sustainability business model in financial technologies firm primary evidence from utilization of innovative platforms इसमें भी थोड़ा सा प्रॉब्लम लग रहा है this paper aims to investigate and discover the demographic and how corporate leaders in fintech sector firms representing their implementation of sustainable business model
Identify a benchmark profile of CEOs and to understand what are the main features. Okay, what are the main features giving more opportunity? Main feature, for example, age, giving more opportunity to develop and maintain sustainable business model using innovative platform. ठीक है. The research question are answered through a quantitative methodology using descriptive stats. The researcher collected sample of the series observed tested an average level of major CO demographic feature. Additionally, the people export they have major probability effect finding, assuming a relevant part of index from the knowledge of the first or the relevance of several C demographic characteristics. Additionally, the age tenure and originally the paper is novel because contribute to literature in the internal governance and sustainable vision. Honestly, no, not if a monopoly study contributes to the identify the CEO demographic and correction that foster financial transition towards sustainable business model. अच्छा, दिस पेपर कैन नॉट बी इंक्लूडेड क्योंकि इसके अंदर भी अगेन सीईओ या सीईओ की जेंडर डाइवर्सिटी और उसकी पर्सनल करेक्टरिस्टिक्स की बात हुई है, लेकिन दूसरी तरफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग जो है उसकी बात नहीं है. अच्छा, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग क्वालिटी जो है उसके ऊपर कुछ प्रॉब्लम है, तो उसकी क्लैरिटी के लिए आई हैव ए डॉक्यूमेंट जो ये इधर अवेलेबल है. ये डॉक्यूमेंट मैं आप लोगों के साथ शेयर कर लूँगा. ठीक है, तो आप ये डॉक्यूमेंट जो है इसको एक दफ़ा रीड आउट कर लें. दैट इज़ रिगार्डिंग अर्निंग क्वालिटी. ये नीचे प्रॉक्सीज जो है वो अर्निंग क्वालिटी की उनके डिटेल्स नहीं है. यू कैन रीड दिस प्रॉक्सीज these two pages, then you can understand कि अर्निंग क्वालिटी से क्या मुराद ली जा रही है इस प्रोसेस में.